Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great, staying safe and protected and taking all the precautions during this time of pandemic. As Muslims, we all know that Ramadan are around the corners and some of the Muslims are worried and they're saying that fasting can cause dehydration in the body and it can also weaken the immune system. So today I am here and I'm gonna answer this question. And there's this being said again and again and continuously that when you drink a lot of water, it can reduce or lowers the risk of getting coronavirus infection. What WHO said, I'm gonna tell you that WHO declared that drinking water or gargling with water does not protect people from being infected with coronavirus, but water is important for the moisture of the body and it helps keeps the respiratory tract moist for a longer period of time. Second thing, Islamic scholars ये कहते हैं that it is not permissible to skip fast in fear of catching coronavirus, except when you are going through some health condition or where you are suffering from a very worse condition and you may fear that fasting can make it more worse. सिर्फ उस condition में आप अपना fast skip कर सकते हैं. इस condition में कि आप कोरोना से डर रहे हैं, इस condition में आप अपना fast, हम मुसलमान अपना fast skip नहीं कर सकते. Now we are going to talk about one type of fasting that is called intermittent fasting. Now, what is intermittent fasting? Intermittent fasting basically means that we eat for a certain period of time and then we stop eating or we'll fast for a certain period of time. For example, how I will explain that? उसमें ये होता है कि for example आज का दिन है तो आज मैंने 5 PM तक 7 AM से लेके 5 PM तक जो मुझे खाना था मैंने वो खाया और फिर उसके बाद 5 PM के बाद मैंने कुछ नहीं खाया, मैं फास्टिंग में चली गई और फिर मैंने नेक्स्ट डे 7 AM पे खाना खाया. तो दैट इज ओवरऑल कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग. और ये जो टाइम पीरियड होगा 5 PM से लेके 7 AM का, उसमें मैं कोई खाना नहीं खा सकती, कोई कैलोरी रिच फूड नहीं ले सकती, लेकिन मैं कॉफी और टी ले सकती हूँ और कोई भी नॉन कैलोरिक फूड जो है वो ले सकती हूँ. उसके अलावा पानी भी पी सकती हूँ. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, ये जरूरी नहीं, ये ऐसे होता है कि आपने 8 आवर्स जो है वो खाना खाया और फिर 16 आवर्स की फास्टिंग की, या फिर आपने 14 आवर्स की फास्टिंग की और 10 आवर्स खाना खाया, या फिर 12 आवर्स एंड 12 आवर्स का भी रेशो हो सकता है. इट कैन बी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह कर रहे हैं, बट ये बेसिकली मेरा तरीका है टू एक्सप्लेन व्हाट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज. नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह से हमारी बॉडी को रीसेट कर देती है, क्योंकि जब हम इतने आवर्स के बाद खाते हैं तो हमारी बॉडी प्रिपेयर होता है, हमारा माइंड प्रिपेयर होता है. नेक्स्ट थिंग, जब हम इतने आवर्स के बाद खाएं तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड स्टार्ट आवर डे विद सम वार्म वाटर एंड नेक्स्ट थिंग बाय टेकिंग अ लॉट ऑफ सनलाइट. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है दैट कोरोना वायरस, yeah, this is said that in particular situation corona doesn't like warm in general, so the environment we create is uninviting for the virus. तो हम जो अपनी बॉडी में warm environment बना रहे हैं वो uninvited and unwanted environment है for the corona virus. Now what I'm saying is that okay, there is no evidence available that says that fasting helps for corona, बट मैं ये बताऊंगी कि फास्टिंग ओवरऑल बहुत गुड, बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए एंड इट मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर. एंड हाउ इट डू इट, बेसिकली फास्टिंग डू मेटाबॉलिक स्विच. व्हाट इज दैट? नाउ मीन जब हम फास्टिंग नहीं कर रहे होते तो हमारी एनर्जी के लिए बॉडी कंज्यूम करती है ग्लूकोज को, हमारी बॉडी के बाहर से जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज को कंज्यूम करती है एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. बट व्हेन वी आर फास्टिंग, क्योंकि हम कुछ खा नहीं रहे होते, तो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए एज अ फ्यूल फैट्स को इस्तेमाल करती है, कीटोन्स को इस्तेमाल करती है जो डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम फैट. So it basically helps in making our immune system stronger. It also reduces inflammation, or it also reduces the oxidative stress in our body. Now, so it is very, very good overall for our immune system, but there is no evidence available that says that fasting is beneficial for the patients of coronavirus or the people who are suffering from coronavirus. And one thing that I want to say, that if you are suffering from coronavirus or if you contract coronavirus, that does not mean that आप अपने आप की body को insist कर लें fast करने के लिए. You just need to eat fresh vegetables, fresh fruits, fresh juices, takes a lot of vitamins, especially vitamin D, take a lot of zinc, drink a lot of water, and do all of the things that can rebuild your immunity. So that's what you have to do. And one thing that I really, really want to say before going to end this video is that if you are pregnant or if you're suffering from any of the health condition or if you're going through any of the worst time, you should consult your doctor before you start this fasting.
One thing that is very, very important that I'm gonna say here, that the fasting also helps in reducing the blood pressure, and it also helps in reducing the blood sugar levels. तो फास्टिंग इन दिस वे इज ऑल्सो बेनिफिशियल, क्योंकि ये कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो मोर प्रोन होते हैं ऑफ हैविंग कोविड-19 और कोरोना वायरस इन्फेक्शन. सो व्हेन यू आर फास्ट, आप व्हेन यू आर फास्टिंग, तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो लो हो जाते हैं. सो ऑब्वियसली आपका रिस्क ऑफ गेटिंग कोरोना वायरस जो है वो कम हो जाता है. सो इन दिस वे इट इज बेनिफिशियल, but overall there is no evidence available that will say that fasting is beneficial, intermittent fasting or any type of fasting is beneficial or not. So I hope कि मैंने आपकी जो भी queries हो उनको help कर दी हो, और आपकी जो भी questions हो उनको answer कर दिया हो. And I think this is it for this video. I shall see you in another video. तब तक के लिए take care, stay safe, stay indoors, take all the precautions and be protected. And Allah Hafiz.